जय जगन्नाथ पिला माने सप्तम श्रेणी इंग्लिश बॉय jasmine रा आज आमे द्वितीय यूनिट प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। देखो पाठ यूनिट 2 रा नाम होची विट एंड ह्यूमर एनिमल बार्स एंड डॉक्टर डोलिटिल। एडी देखो let us do these activities before we read. Do you have pet or animal? If yes, देखो ये देछि एक नंबर प्रश्न देखो if yes why, if not why not, how do people usually spend time with a pet or domestic animal? Share your thought with your classmate and the teacher. देखो आंसर मु तुमको शो कर दउची तमे देखिनियो। देखो yes, I have a pet dog. I keep it because it is loyal, friendly, and guard our house. I love my pet very much. एमती लिखिदब एक नंबर देख लो पॉज करी आंसर लिख दियो। द्वितीय प्रश्न देखो यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल एंड बर्ड्स टॉक। You would like to talk an animal or a bird to share your views. Discuss your feeling in groups. तो देखो यार भी आंसर मु तुमको देखे दउची तो I would like to talk a bird. I would ask it how it flies so high, where it travels, and how it builds its nest. I would also ask how we can protect birds and nature. देखल ए विषय तमे डिस्कशन करबो पॉज करी पिला माने आंसर टी लिख दियो। देखो ए 3 नंबर ता प्रश्न देखो closely observe the body language of animal and birds. You can understand why they want to tell you. देखो एटा देखो चारोटी एनिमल देछि डॉग देछि हला कैट देछि डॉग देछि हला पैरट देछि तो ए सब गुडा को देखो आंकर कोन फीलिंग्स से माने कन्वे करचती तमे सांग मानक सहित मिसिकरी लिखिबो। ए चारिटा पिक्चर देखछो हम गोटे गोटे करी तुमको आंसर देखौची लिखि दियो। एक न पिक्चर कौन कहूची डॉग को देख डॉग कौन कहूची इमोशन तार कौन हैप्पी वाला इमोशन हला एक्साइटेड रीजन द डॉग हैज स्प्रेड इट्स विंग्स एंड अपीयर्स चीरफुल से कौन है ना खुशी रे पर झाड़ी के डेणा अच्छी हाँ ना नहीं हाँ लिखि दियो पॉज करी पिला माने लिखि दियो। द्वितीय पिक्चर देख कैट कैट को प्रकार इमोशन कन्वे करची लिखि दियो पिला माने इमोशन एंग्री और फ्राइटेन्ड डरिक रे अछि कैट रीजन कोन द कैट हैज आर्क्ड इट्स बैक एंड रेज्ड इट्स फोर हला डरिक रे अछि तो रीजन कि जानला एटा एंग्री इमोशन ना देख तार पछटा उठिक रे अछि लांज आउ ता लुम पूरा उठिक रे अछि ता माने से डरिक रे बा रागरे अछि पॉज करके लिख दियो। 3 नंबर पिक्चर देखो डॉग डॉग रे एक्सप्रेशन किपरि अछि डॉग हैप्पीली फ्रेंडली हला द डॉग इज wagging its tail and smiling देखो लांज ऊपर को ठिकरी हसुची डॉग इमोशन ता कन्वे करची तो लिखि दिया पॉज करिकरी।
तापर नेक्स्ट पैरेट पैरेट 4 नंबर देख इमोशन कौन पैरेट रो एक्साइटेड चीयरफुल हला द पैरेट हैज spread its wings and looks active देखला तो चारटा जाकर आंसर पॉज करिकरी तमे पैरेट रो भी इमोशन लिखि दियो नेक्स्ट आगु जिबा लेट अस रीड ए पाठटी तुम पढ़िबो एटी साइड देख पिला ने देइछि कोन ना अर्थ गुडाक देइछि अर्थ गुडाकर मीनिंग तमे लिखिबो हला एटी एपटे भी देइछि क्रैकर्स गुड प्रेशियस क्रम्स स्क्रेचिंग हला ट्विचिंग एटी देखो select the right answer and fill in the blanks. The cat's food man suggests that Dr. Dolittle should become an animal doctor because he believes that Dolittle Dolittle days. एटी देख चारटा ऑप्शन देछि चारटा ऑप्शन रो तार आंसर खोजी के लिखबो एक नंबर ऑप्शन देला कोन earns less fee by treating human patients, enjoys the company of animal as they speak less, dislikes spending time with human patients. 4 number knows more about animal than the local veterinarians. तार आंसर कौन हबो पिला माने तार आंसर हबो knows more about animals that the local veterinarians हला देखि दिया म आंसर ता देखि दउछि सब माने लिखि दियो हला रीजन 2 नंबर आंसर हबो knows more about 4 नंबर आंसर veterinarian हला पॉज करी पिला माने लिखि दियो नेक्स्ट 2 नंबर तक fill in the blanks by choosing the suitable option given in the bracket देखो एटी लिखा है डॉक्टर Dolittle reacts to Polynesians information about animal language with both excitement and daze तापर दे चेक certainly or curiously तापर दे he rushes to daze write or memorize the birds words that words she provide and it's interested in learning more देखो एटा कौन हबा आंसर मैं तुमको देखे दउछि एटे शो कर दउछि आंसर फर्स्ट तो हबा हमर क्यूरियोसिटी हला सेकंड जो डेस फिलअपटा अछि हमर हबो राइट हला क्यूरियोसिटी राइट पॉज करके पिला माने आंसर ता लिखि दियो 3 नंबर लिखा डू यू थिंक डॉक्टर Dolittle would be famous as an animal doctor if yes why if not why not तो देखो आर आंसर कौन हबो
देखो, yes, I think Dr. Dolittle would become the famous as an animal doctor because he could understand and speak the language of animals. This helped him know their problems easily and treat them with care. As a result, many animals came to him for treatment. तो देखो आर आंसर तुम पॉज करके लिख दिया पिला तापर नेक्स्ट चलो लेट अस डिस्कस what become a common sight in Podley by after doctors Dolittle started treating animals. Select the correct ones. तर आंसर देखा देखे दउची तार करेक्ट ऑप्शन हबा birds riding a top farm animals. 4 नंबर हबार सठ उत्तर पॉज करी पिला माने लिखि दियो नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन देइछि what did the doctor Dolittle do when lots of animals came to see him 2 नंबर देखो आंसर मु तुमको देखे दउछि लिखि दियो when many animals came to see him Dr. Dolittle arranged separate doors and waiting places for different animals he even made a tiny tunnel for the mice leading to the cellar where they waited patiently for their turn. He traveled every animal with care. ହେଲା ପଜ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅ next ଦେଖ arrange the following event in correct order according to the story 3 has been done for you share your answer with your classmate and teacher ଦେଖ ଏଇଠି 10ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି कोडा को लाइन हबो देखो एटा 1 नंबर दे देछि 3 नंबर टा ए मैन विथ ए स्टमक एक्ट विजिट डॉक्टर डुलिटल एंड सजेस्ट would he should treat animal instead of people एटा 1 नंबर हबो 2 नंबर दे देला द parrot Polynesia encourages Dr. Dolittle to become an animal doctor revealing that animal can talk एटा 2 नंबर हे गेला सिमिति 3 नंबर कोन हबो 4 नंबर कोन हबो तुमको लिखिबाको पड़िबो देखो देखो एटा 3 नंबर हे जिवो एटा 3 नंबर है जीवो डॉक्टर डुलिटल डिसाइड टू स्टॉप बीइंग ए डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम ए डॉक्टर फॉर एनिमल्स 3 नंबर है गला तापरे 4 नंबर पॉइंट कोड हबो देखो 3 नंबर सेंटेंस ता नेक्स्ट देखो एटा हमर हबो कोन एटा हबो हमर 3 नंबर Polynesia teach Dr. Dolittle animal language and he started understand and communicating with animals तापरे 4 नंबर एटा हबो हला Dr. Dolittle decided to stop being a doctor for people and become a doctor for animal 4 नंबर हे गला तापरे 5 नंबर हमर एटा देखो a plucked horse with vision problem visit Dr. Dolittle with prescribed green spectacles to improve the horse eyesight एटा हे जा 5 नंबर हे गला 5 नंबर पर हमर 6 नंबर कोड आबो देखो 8 नंबर टा डॉक्टर डुलिटल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ एनिमल्स डॉक्टर डुलिटल्स से एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ द एनिमल्स एटा 6 नंबर हे जीवो हला
तापर 7 नंबर देख 10 नंबर देख वार स्प्रेड्स एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स एटा जे हमर 7 नंबर 10 नंबर टा हमर 7 नंबर हे जिवो war spread and people start bringing their sick pets and farm animals to Dr. Dolittle for treatment एटा हेबो 7 नंबर 8 नंबर देखो 8 नंबर कोटा हबो 8 नंबर सेकंड हबो animal from near and far come to Dr. Dolittle for help crowding his garden एटा हे जिवो 8 नंबर हला तापरे डॉक्टर डुलिटिल इंस्टॉल स्पेशल डोर्स एटा हे जे हमर 9 नंबर एटा हे जो 9 नंबर और 10 नंबर ताडे देच 9 डॉक्टर डुलिटिल गेन्स फेम नेक्स्ट जिबा हम पिला मन क्वेश्चन को एटा देखो एक नंबर प्रश्न why had Polynesia never used bad language with the Dr. Eliot देखो एक नंबर प्रश्न रो उत्तर मैं तुमको देखे दउची लिखि दबो देखो आंसर कोन हबो Polynesia had never used bad language earlier because Dr. Dolittle would not have understood it then हला पॉज करके पिला माने आंसर टी लिखि दियो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आइडेंटिफाई whether the following statement is true or false देखो Polynesia had been enjoying a food item while talking to Dr. Dolittle तर आंसर कोन हो पिला माने देखो एडा होची ट्रू स्टेटमेंट एंजॉय फूड आइटम व्हाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डुलिटिल तापर देखो पॉज करी लिखि दियो 3 नंबर आंसर देखो हाउ डिड द डॉक्टर डुलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट ऑप्शन ए देला एंजाइटी ऑप्शन बी देला सरप्राइज्ड ऑप्शन सी देला एंग्री ऑप्शन डी देला रिलैक्स्ड देखो आंसर देखि दउची लिखि दियो तो सठिक उत्तर हबो बी सरप्राइज्ड पॉज करी पिला माने आंसर टी लिखि दियो नेक्स्ट जिबा 2 नंबर देखो एट देखो देछि कोन ए नंबर देखो चूज ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फ्लावर बेड digging flower bed dash field तो आंसर देखे दउची पिला ने लिखि दियो आंसर कोन हबो प्लगिंग digging flower bed प्लगिंग field पॉज करी पिला माने आंसर टी लिखि दियो 2 नंबर देखो चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस डॉक्टर डुलिटिल्स एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज ऑप्शन ए देला रेस्पेक्टफुल बी सेंटिमेंटल सी अंडरस्टैंडिंग डी केयरफुल कौन है पिला माने कहलो ना अंडरस्टैंडिंग हैला पॉज करी पिला माने लिखि दियो 3 नंबर आंसर मु पढु complete the sentence with an appropriate reason based on the extract we can conclude that doctors take animal for granted because देखो 3 नंबर आंसर में देखो जी बिट 3 रो because animals cannot complain about their problems like human beings हला 3 नंबर आंसर लिख दियो पॉज करी लिख दियो नेक्स्ट दिबा 4 number do you agree with the concluding sentence of the extract why not देखो इडी 4 नंबर आंसर देखो yes I agree treating animal is difficult because they cannot describe their illness in words
A good animal doctor must carefully observe and understand their behavior to diagnose their problem correctly. ହେଲା ପଜ କରି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ वी ସେ that Polynesia was a good trainer of animal language। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖ Polynesia patiently taught Dr. Dolittle the language of birds and animals. She explained the meaning of the sounds and gestures, helping him understand and communicate with other with animal confidently। तो आंसर टा पॉज करी पिला माने लिख दियो। 2 नंबर देखा explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment। तो 2 नंबर आंसर देखो Dr. Dolittle treated every animal with care and kindness. He arranged separate doors and waiting places for different animals and even made a tiny tunnels for the mice. He listened to each animal's problems, understood it, and gave proper treatment। ହେଲା 2 नंबर आंसर पॉज कर पिला माने लिखि दियो। नेक्स्ट जिबा 3 नंबर हाउ डज द parrot's advice highlight the importance of listening in different way। तो आंसर देखो पिला माने the parrot Polynesia teaches Dr. Dolittle that animals communicate through sounds, gesture, and body language. By listening carefully and observing them, he learns their language and understands their feelings and problems. This shows that listening is not only hearing words but also understanding actions and expressions। तो 3 नंबर आंसर एटा हबो पॉज करी पिला माने लिखि दियो। 4 नंबर देखो state the qualities of Dr. Dolittle that made him famous among the animals। तार उत्तर देखि दियो पिला माने कौन कौन क्वालिटी थिला kind and loving towards animal, patient and caring, able to understand and speak the language of animals, a good listener, skilled in treating animals, helpful and respectful to every animal। ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। तो ये 5टा 6टा क्वालिटी तमने नोट कर दियो। 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट पॉज करी लिख दियो 5 नंबर व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड इफ पीपल सडनली गेन्ड द एबिलिटी लाइक डॉक्टर्स डूलिटिल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ एनिमल्स। तो देखो कौन बार आंसर 5 नंबर if people would understand and communicate with animals। answer देखो people would have love and respect animal more, animal would receive quick and better treatment, of more animals shelter and resource centers would be built, cruelty to animal would decrease, people would protect wildlife and nature better। ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦବ। ହେଲା ପଜ କରିକି ଲେଖି ଦିଅ। नेक्स्ट आमे जिबा देखा एटी देछि complete the following table correctly by choosing the word from the box given below। an example has been done for you। sailor, song, treat time, check in, plug horse, harvest, mice, window sill, well bred। hyphenated word, open compound words, closed compound word। देखो 3टा जा कैटेगराइज मु कर दउची तमे उत्तर लिखि दबो। देखो तार उत्तर मु तमु देखौची। देखो hyphenated word होची हमर check in, well bred हला तापर कंपाउंड ओपन कंपाउंड वर्ड होची sailor, song, harvest, mice हला ए चारटा हला हमर हला आउ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड होची treat time,
and windshield ହେଲା three time windshield ଲେଖିଦିଅ ପଜ କରି ଲେଖିଦିଅ ନେକ୍ସଟ ଯିବା देखो may join the column A with another word in column B. Mark a new compound word in formed with a new meaning. One has been done. देखो fun loving. एटा कौन है fun loving ହେଲା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତଳେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି a fun loving dolphin danced playfully in the century. B ନମ୍ବର କଣ ହବ high jump କଣ ଏଟା ସରି high This chapter of monkeys echoed through the high riser ହେଲା ଏମିତି ଦେଖ high riser ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିପାରିବ high riser ହେଲା ତାପରେ never ଏଠି ଦେଖ କଣ ଲେଖିପାରିବ never ending through the never ending their alignment scored never से नंबर कौन हबो never ending ହେଲା तापर दे लाइन फॉरवर्ड डी नंबर देखो अर्ली 4 नंबर देखो अर्ली अर्ली बार्स कोड अच्छे देखो डी नंबर कर दो हमारा अर्ली बार्स होला ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली ई नंबर देखा सॉन्ग देखो सॉन्ग रो कौन हबो नेक्स्ट देखो पिला माने एडा हमर हबो सॉन्ग सॉन्ग लाइन gracefully song line हला तापरे एफ नंबर देखा ओवरहेड एफ नंबर देखा कौन हबो ओवरहेड ट्री एटा हमर ट्री टॉप्स हला तो ये लिखि दबा हमर एफ नंबर ओवर हेड एटा जी नंबर कौन है जो ट्री टॉप्स ना स्ट्रिप्ड joyfully from the branches all creatures were happy with Dr. Dolittle's care
Underline the names of animals that are hidden in the sentence given below. Clues are given in the bracket. An example has been done for you. Dr. Dolittle was eating goat meat for his breakfast. A farm animal. देखो ये लिखा है an insect. ये देखो तमे बॉक्स कर दो मु तुमको हाइलाइटर कर दूसरी. All ladies began to bring him their pets. देखो आंसर कौन हो पिला माने all lady begin to bring their pets. An insect. Ant. आंसर कौन हो पिला माने ants. देखो आंसर टा लिख दिया. 3 नंबर देछि. The author sees the connection between human and animals. Connection between human and animals. A farm animal. Farm animal गोटे आंसर पाइबो. जेमिति हमर असला एटा हमर भूल अछि हला. एटा देखो एटा भूल अछि. 3 नंबर टा भूल अछि. 4 नंबर टा देखो. The three baby dinosaurs are from ice age. Field animal. 3 नंबर टा देखो भूल टा मु तुमको देखे दउची. हला हला देखो आंसर अब सेंड. हला पॉज करके लिख दियो. 4 नंबर देखो. The three baby dinosaurs are from ice age. Field animal. देखो आंसर. साउरस हला. 5 नंबर देखो. The patient who came late didn't know where to go. Sheep of the desert. देखो sheep of the desert किए camel.
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ camel ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 4 number, read the following sentence from the text. That man has got sense. Can't you see this? It stopped raining. In this past tense, the verb has got denotes an action that is relevant at the time of speaking. In second sentence, the verb has stopped denote an action that is recently completed. ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ fill in the blanks is the correct verb form present perfect। ଏଠି ଆମର କଣ କହିଛି ନା present perfect verb କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। present perfect। Since becoming an animal doctor, Dr. Dolittle dares to communicate with all animals and birds. He dares countless farm animals and pets with care. The parrot Polynesia dares teach। ଏଠି ଦେଖ ତମର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି 6ଟା ଯାକର ତମେ ଏଠୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦବ। देखो फर्स्ट नंबर कौन हम लॉन्ट हैज लॉन्ट। सेकेंड नंबर देख ट्रीट हैज ट्रीटेड। थर्ड नंबर देख टीच हैज टॉट। 4 नंबर देख राइट हैज रिटेन। 5 नंबर देख है 5 नंबर टा देखी दियो। 5 नंबर कौन देखिए ब्रिंग हैव ब्रॉट। 6 नंबर देख बिकम हैज बिकम। एपर भाबे तमे लिखिदब है। नेक्स्ट जीवा पॉज करके आंसर टा लिखि दियो। Let us listen. You will listen to an announcement as you listen state whether the following statements true or false. Transcript from the picture on page number 80। 28 पेज लिखियो। डॉक्टर डुलिटल्स न्यू दिस क्लिनिक प्रेजेंट एन ऑफर फॉर फ्री मेडिसिन। तो देख आर उत्तर कौन हम The new clinic is located in the town of Dash. The address is 12 Dash Lane. The clinic देख 2 नंबर टार उत्तर मु तुमको शो कर दूची लिखि दियो। टाउन नेम एड्रेस क्लिनिक टाइमिंग सैटरडे स्पेशल टाइमिंग बेस्ट ट्रीटमेंट फ्राइडे फ्रॉम सैटरडे बेस्ट ट्रीटमेंट। तापर देखो एनिमल वेलकम्ड। एनिमल डॉक्टर डुलिटिल एनिमल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। 6 नंबर ऑल एनिमल हॉर्सेस काउस एनिमल्स वेलकम्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर
others are welcome। ହେଲା ତମେ ଏଇଠୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ କନଭରସେସନ ବିଟୱିନ ଡକ୍ଟର ଏ ପେସେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ କନଭରସେସନ ଦେଇଛି ହେଲା। ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତମେ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନୋଟିସ remember to use formal language in third person. Write the cause of writing of this whom, when and where to etc. Write the notice in a box. Name of the school, notice, date लिखिबा एटे, dash, mention the header, title। एट देखो एटा तुमको मु शो करके देखे दउची लेटर टा केंदी लिखिबो। देखो डेस्क फिलअप लिखिदब। एक नंबर डेस्क फिलअप लिखियो annual health checkup। 2 number डेस्क this is to inform all the student of class grade 6 to 8 about health checkup। डेट लिख दो थर्सडे एंड फ्राइडे 27 एंड 28 जुलाई 2026। तापर लिख दो गोपबंधु हॉल हैला। तापर लिखियो गोपबंधु वेन्यू गोपबंधु हॉल। तापर डेट लिख दो कौन कलेक्ट योर हेल्थ कार्ड फॉर दी हेल्थ चेकअप। तापर देखा फॉर क्वेरीज और फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 7 नंबर डेज लाबरे कॉन्टैक्ट लिखि दो हैला। एटा भलसे लिखि दियो 7टा डेज रे 7टा दिनसा लिखि दबो हैला। लेटर कंप्लीट हे जियो। नेक्स्ट एडी देखो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक एटा 3 नंबर क्वेश्चन देछि। आर आंसर तुमको देखे दउछि तमे आर आंसर देखि दबो। आई नंबर देखो प्लान ए visit to Gosala and find out how cows are looked after। देखो एटा visit to Gosala, we observe that the cow are given clean and water nutritious food। Their sheds are cleaned regularly। See cows receive medical treatment from veterinarians। They had a bath and cared for properly। The cow are protected from extreme heat and rain। एटा एक नंबर आंसर टा हैला। पॉज करके लिखि दियो। 2 नंबर आंसर टा देखो
लिखिल। 2 नंबर देख, व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ stray and abandoned animals? Provide food and shelter for animals, take them to animal shelter, adapt them by taking them home, give the reason for your response. 2 नंबर देख, एड देख, ये चार्टा जाकर तमें लिखिदब है। नेक्स्ट, 3 नंबर देखा, Ayurveda and oldest existing medical system in India. Animal species receive good medical care in ancient India. Indian medical treatises like Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and Harita Samhita contains different care of animal. Find out the different organization work for the welfare of animal with the help of teacher. देख तुम कहीदे को ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर कर एनिमल देख, पीपुल फॉर एनिमल पीएफए, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पीपुल्स ट्रस्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये सब गुड़ाक ऑर्गेनाइजेशन जोड़ाक एनिमल वेलफेयर बोली काम कर। आज ये पिला माने आगामी क्लास रे देखा सेकेंड चैप्टर रे। धन्यवाद फॉर योर पेशेंट लिसनिंग and do subscribe our channel.